हेलो गाइस, अपूर्व दिस साइड। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन खबर बनाने वाला हूँ। वी हैव मेड अ सिंगल फ्रेमवर्क फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द बिल्ट इन यू नो टैली रिपोर्ट्स प्लस आवर कलेक्शंस। मतलब हम लोगों ने एक ही में वो डाल दिया है। ठीक है ना, इसको करके दे दिया। मतलब इनिशियली व्हाट हैपेंड विद द पावर बीआई मॉड्यूल जिन्होंने टीसीपी इंस्टॉल किया था, दैट दे वर ओनली गेटिंग द बेनिफिट, only getting the benefit of our custom collections, right? Okay, but now one can get the benefit of all the inbuilt tally reports also. ये भी हम लोगों ने अपना ऐड कर दिया, राइट? ये भी हम लोगों ने कर दिया थैंक्स टू क्लॉड। तो ये जो है क्लॉड का। सेकंड, जो सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि अनलिमिटेड कंपनीज, मैं जितनी चाहे कंपनीज ले लो, डेवो आपकी वाउचर रजिस्टर अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज एंड कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। ठीक है ना। थर्ड, इट इज डेस्कटॉप ओरिएंटेड। पूरा का पूरा मैंने डेस्कटॉप ओरिएंटेड बना दिया। ठीक है ना। फोर्थ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि डेस्कटॉप ओरिएंटेड। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द टीसीपी वाज एन इशू, राइट? रिमूव। फिफ्थ, पावर बीआई वाज एन इशू। भाई इशू था कि नहीं था? रिमूव। इट्स ऑल बीन रिमूव। अब बहुत सिंपल कर दिया है, केवल एक्सेल में करके रख दिया है। अनलिमिटेड दिस थिंग है ये। अभी हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव लुक्ड एट ओनली सेल्स। भाई आप सेल्स तो करनी है भाई, कि कोई भी कंपनी है सेल्स करती है, तो हाउ डज वन एक्सट्रैक्ट सेल्स डेटा? अब इसे देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, राइट? तो अब आपको सिंगल इंटरफेस में, सिंगल इंटरफेस, मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस। तो हम लोग कैसे करते हैं? पहला तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द वाउचर रजिस्टर, सिंपल है। सेकेंड, दे यूज द डे बुक, जो कि मैं आपको बात करूंगा। थर्ड, some of the people actually what they do is they use what we call the voucher ledger। ये सब आपको एक ही में मिल रहा है। एंड लास्ट वन इज अ कस्टम कलेक्शन। ठीक है ना। तो अगर यू कैन डिसाइड वॉट एवर वे यू वांटेड, राइट? एंड ओनली व्हेन you see the difference between our custom collection and others, that is when you use our custom collection। सिर्फ क्लियर? तभी करना, नहीं तो मतलब नहीं। अदरवाइज गो विद द इनबिल्ट रिपोर्ट। तो हम आपको दे देंगे भैया, ठीक है, आप ये कह दो कि भैया मेरे को लेजर वाउचर से अक्रॉस ऑल द कस्टमर्स लेजर एंड इन्वेंटरी का चाहिए, आई कैन गिव इट टू यू। दैट इज नॉट ऑल पॉसिबल। What is the real difference is cloud data, right? He is come into the picture now. He's making everything. So it has, Claude has actually is cracked the code, the source code of Tally, right? तो वो अब सब कर रहा है। ठीक है ना। Now what actually how it works is कि आपको करना क्या होगा कि ये डिस्क है, तो ये आपके पास एक EXE आएगी। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आपको टैली पे पहले जाना है, एंड यू गो डाउन टू हेल्प, एंड देन यू गो डाउन टू सेटिंग्स, एंड देन यू गो डाउन टू कनेक्टिविटी, एंड देन यू प्रेस दिस। ये आपका दोनों आने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ओडीबीसी एनेबल होना है, बिकॉज आई एम गेटिंग द टैली रिपोर्ट्स इन। सिंपली गो टू दिस EXE एंड क्लिक ऑन दिस मॉड्यूल। ये EXE मैं आपको दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये मैंने EXE जो थी मैंने क्लिक कर दी। अब जब मैंने क्लिक की तो ना, पुट इन द पोर्ट विच इज 9000। आई चेक ना, मेरे को पांचों मेथड से चाहिए। आई नीड पे कस्टम कलेक्शन, आई नीड पे वाउचर, लेजर वाउचर्स, एंड देन द कंपैटिबल विच इज द डे बुक। तो मैं पांच को किया, मैंने एंटर किया। विच डेट? तो अभी आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का चाहिए? ये 1/4। दिस वी हैव एक्चुअली केप्ट बिकॉज people feel more comfortable, so I didn't change it. So like I did this, and
बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको बोथ जेसन एज वेल एज एक्सेल में आउटपुट आ जाए। यहां तक क्लियर है? अभी मैं आपको सेल्स को निकालने का फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे निकलता है, यू गो डाउन टू सेल्स अकाउंट, यू गो डाउन हियर, यू गो डाउन हियर, तो ये लेजर वाउचर से एक रिपोर्ट निकलता है फॉर ईच सेल्स अकाउंट। तो what the code is basically doing is for each of the sales account across each of the companies वो लेजर वाउचर से रिपोर्ट निकाल रहा है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें एक ये चीज है कि जो ऑप्शनल वाउचर्स हैं वो शायद नहीं देता है बिकॉज इट्स हिटिंग द P&L। तो ये जो है ऑप्शनल वाउचर जो है वो आपका नहीं आएगा। राइट, तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि इफ यू लुक एट इट, तो दिस इज द फोर्थ इज द जनरल वाउचर, तो ये ऑप्शनल वाउचर नहीं आएगा। तो इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर डे बुक हियर, द दिस वाउचर इज द फिफ्थ ऑप्शन विच इज 980 विच विल नॉट हिट द लेजर वाउचर। ये क्लियर है आपको? तो मतलब अगर मैंने सेल्स लेजर लिया एंड सेल्स लेजर के बेसिस पे अगर मैंने किया, तो अगर मैं पी पे गया एंड इफ आई गो डाउन टू सेल्स अकाउंट्स and I go here and I go down here to sales ledgers, enter. So if you see the optional voucher will not, other vouchers will come। ठीक है ना? जो भी है दिस इज द कंप्लीट सेल्स। तो पहला ये हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। सेकेंड वे इज दैट how you do it in the conventional way, you go for D plus D, right? And within the day book you press what we call the F4, राइट। और आपने F4 में प्रेस करके सेल्स ले ली तो आपको ये सेल्स के वाउचर मिले। इज इट क्लियर? राइट, एंड देन यू गो डाउन टू F12 एंड देन यू कैन कॉन्फ़िगर इट एंड यू कैन से यस नरेशन डिटेल्ड है। तो आप हमें किसी भी तरीके से दे दो। अभी हमने केवल इन्वेंट्री, वी कैन आल्सो गिव यू बिल बैच वगैरह, वो सब जो है वो इसमें से आ जाए। दिस इज सेकंड वे, दिस इज अ डे बुक पे। द थर्ड वे is I go down to D, I go down to A, I go down to S, and this is the sales register। यहाँ पे आपने वाउचर टाइप में सेल्स किया तो आपको सेल्स का ही पूरा का पूरा मिल, ठीक है ना? इफ यू गो डाउन टू वाउचर टाइप विच इज द क्रेडिट नोट, देन आई गो डाउन टू हियर, तो आपको क्रेडिट नोट। उसी तरीके से जर्नल, देन दिस। सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी दिस थिंग इज देयर। एंड फोर्थ ऑफ कोर्स इज द कस्टम कलेक्शन। तो जब आप इसको रिपोर्ट को देखोगे, so what you will see that using our collection you get sales movement by every place, right? तो अगर आपकी जो sales की movement है it is in general, so now I have to go back into tally and I will show you how the data has been there। तो आप इस data से आप actually you can actually check it। You go down here, you go down to day book and when you check it, so हमने क्या किया, receipt में भी जो है actually sales की entry डाल दी, देन जर्नल में भी हमारी सेल्स की एंट्री डाली है एंड इवन आइटम्स आर देयर, ऑल्दो इट्स नॉट इनवॉइस, इट्स आल्सो देयर। इज इट क्लियर? फिर हमने यहाँ पे जर्नल में, सो आई नीड ऑल द डिटेल्स टू कम फॉर सेल्स हियर एंड इवन द ऑप्शनल वाउचर्स इज देयर। तो आपको हमारे कस्टम कलेक्शन में सब कुछ मिलेगा जो कि आप लोगों के पास, दोज पीपल हु आर देयर दे हैव गॉट दिस पावर बीआई मॉड्यूल यूजिंग टीसीपी, राइट? दैट इज दैट। The second one is, which is going to be here, is with respect to day book, ठीक है ना? So in day book only the sales voucher was there, तो आपको sales voucher में केवल, माफ करिएगा, here ये वाला में सेल्स वाउचर में केवल सेल्स वाउचर की एंट्रीज मिलेंगी। कंट्रोल सॉरी, सो सेल्स वाउचर में आपको केवल सेल्स वाउचर की एंट्री, सो यू सी ओनली योर सेल्स सेल्स सेल्स। इवन द ऑप्शनल वंस, द ऑप्शनल वंस आर गोइंग टू, द क्रेडिट नोट जनरल वगैरह चाहे वो नहीं आएंगे। डे बुक विल आल्सो behave the same way as the sales voucher, okay? It will also get only the sales entries। In ledger voucher, you get everything, but you should also not get the optional sales voucher, जो कि उसमें आया था कि जो कि ये ऑप्शनल था। So actually this should also not come here। हालांकि इसमें क्लॉड ने ऐसा कोड बनाया कि ऑप्शनल वाउचर भी आ रहा है, because a ledger voucher always maps up to your profit and loss, राइट? तो वो वाले जो है वो नहीं आएंगे। तो आपको इसमें जो है चारों के मेथड जो हैं, डिफरेंस क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। यू कैन चेक द रनिंग स्टैट्स एंड देन यू गेट अ सिंगल रिपोर्ट बाय विच यू कैन गेट सेल्स, ठीक है ना? एंड ये हमने आपको दिया है इंक्लूडिंग द बेसिक आइटम मूवमेंट्स, हम लोगों ने कॉलमनार मेथड से दिया है।
So see it, and you also get the master data also with it here. एंड तो आपको इस तरीके से कलेक्शन आइटम वन फास्ट कलेक्शन लेजर वन, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा कैंसल ऑप्शनल लेजर आएगा। राइट, तो मान लो ये है ऑप्शनल नो। राइट, तो अगर मैं इधर आया, you can go to data, you can go down to filter, you can press here, you see this, you can get the optional. Now in your ledger vouchers in the tally report you should not get the optional voucher, voucher ledger का जो ये रहा, you should not get the optional voucher, register में तो नहीं आता voucher ledger का ये रहा। So you should not get the optional one because optional one link setup, पर हमारे कोड में शायद आ गया तो वो नहीं हट जाएगा। बाकी सब तरीके से आपकी सेल्स की वैल्यू जो है पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है ना? तो आपको जो पूरा का पूरा नंबर है, यू विल गेट इट थ्रू अ कलेक्शन, यू कैन चेक इट अप एंड देन गेट बैक। थैंक यू।